Welcome students in Dagur Sahab, myself Vijendra Chauhan, physics faculty. Okay, in last class we have discussed about river boat problem and here we are continuing that topic. Okay, so let us see. So in the last class we have discussed about river boat problem. Okay, so in river boat problem we have seen that if this theta becomes 0 degree, then we will see that that case will be of minimum time or shortest time case. How? Because we have seen that time was width upon this was velocity of boat with respect to the river, and this was component of VBR, that is VBR cos theta. Okay, and this was component that was VBR sin theta, and we have discussed that time will be distance upon speed along the width. Okay, so W upon V BR cos theta. Okay, this was the time formula. Okay, now here we can see that if W and VBR are fixed, इट मीन्स जो विड्थ है रिवर का उसको हमने अगर फिक्स किया और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू दी रिवर उसको भी अगर हमने फिक्स किया तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टाइम इज डिपेंडिंग ऑन थीटा, टाइम इज डिपेंडिंग ऑन थीटा, एंड हियर टाइम विल बी मैक्सिमम, हियर टाइम विल बी मैक्सिमम if this part is minimum, and time will be minimum if this part is maximum. So for shortest time or minimum time, this cos theta should be maximum. Okay, अगर cos theta का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो टाइम का वैल्यू मिनिमम होगा, because here we are seeing that t is proportional to 1 upon cos theta. It means यहाँ पर ये t cos theta के एंटी प्रोपोर्शनल है. ओके, सो एज वी नो दैट cos theta का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos theta is equal to +1, that we know already. Okay, so if cos theta is equal to +1, then theta will be 0 degree. Okay, so if this is maximum, then time will be minimum, okay, it means that will be the shortest time case. Okay, shortest time वाला केस वो होगा जिसमें थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, क्योंकि अगर 0 डिग्री होगा तो cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और अगर ये मैक्सिमम है तो टाइम का वैल्यू मिनिमम होगा. ओके, टाइम विल बी मिनिमम. दैट्स व्हाई वी सॉ इन प्रीवियस क्लास दैट इफ दिस एंगल विल बिकम 0 डिग्री, it means boat will start in this direction, then that will be the case of shortest time. In that case, that boat will start in this direction, flow of river is in this direction, so finally the boat will reach here. Okay, so here we can say that angle is 0 degree, so this is the case of shortest time. Okay, so that's why we called that topic as shortest time case, because in that case theta was 0 degree. I hope you got it. If you have any doubt then you can ask in comment box. Okay, आप लोग comment box में पूछ लीजिएगा. फिलहाल के लिए इसे हम लोग सेव किए देते हैं आपके लिए. Okay, so it is going to save. Okay, and here something not very useful, so we will remove all these things. Okay, so here you got it. If any doubt then you can ask in comment box. Okay, so this is how we got shortest time case. Okay, now we are talking about drift. Okay, now we are talking about drift again actually. Okay, so
as we have seen that drift is the distance of final point of boat. Let boat starts from here and this is the opposite point, just opposite point, that is P. If boat starts in this direction, okay, if boat comes here finally, okay, then this will be the drift, and if boat comes finally here, then this will be the drift. Okay, so actually drift is the distance of final point of boat from point P, and point P is the just opposite point of starting point. Okay, so remember this, drift क्या होता है, ठीक सामने वाले पॉइंट से वो बोट कितना आगे जाएगी फाइनली या कितना पीछे रह जाएगी, उसको ड्रिफ्ट कहा जाता है. ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला था क्या आया था, आई हैव टोल्ड यू, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू द रिवर साइन थीटा माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टी, एंड टी वाज डब्ल्यू अपॉन वी बी आर cos theta. This was the formula of drift, as we have seen earlier. Keep remember it, this is the formula of drift. Now I am going to explain it more. भाई सिंपल सी बात है, this part will be greater than this part. If VBR sin theta, this was VBR sin theta. If VBR sin theta is more than VR, then definitely finally the boat will remain behind from this point P. बोट जो है फाइनली इस पॉइंट P से थोड़ा सा पीछे रह जाएगी, क्योंकि हमने VBR को VR से अगर ज़्यादा रखा तो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर से अगर ज़्यादा हमारा ये वाला कंपोनेंट है, तो जाहिर सी बात है कि बोट अपने सामने वाले पॉइंट से थोड़ा पीछे रह जाएगी. लेकिन यदि VR का वैल्यू, but if VR is more than VBR sin theta, then effect of river will be more than this component of VBR. Okay, in that case we will say that boat will cross this point and it will come suppose here. Okay, so यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बोट इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी अगर VR का वैल्यू VBR साइन थीटा से ज़्यादा है. तो इट मीन्स रिवर का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है इस कंपोनेंट से. ओके, सो रिवर इसको और अच्छे से धक्के मारते हुए यहाँ तक ले आएगी. इट मीन्स ये पॉइंट भी क्रॉस हो जाएगा, और अगर VR कम है तो ये पॉइंट क्रॉस नहीं होगा. सो दिस विल बी ड्रिफ्ट, एंड इफ VR इज मोर देन दिस कंपोनेंट देन दिस विल बी द ड्रिफ्ट. ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है. यहाँ पर था टाइम, और टाइम को हमने रिप्लेस किया है W अपॉन VBR cos theta as we have seen earlier. Okay, so I hope you got it that what is drift here. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई. अगर VR ज़्यादा है तो पॉइंट भी क्रॉस हो जाएगा. अगर VBR साइन थीटा ज़्यादा है, ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है, तो बोट इस पॉइंट से पीछे ही रह जाएगी फाइनली. दैट इज ड्रिफ्ट. That is also drift. Depending upon the question, we can find out value of drift. Okay, I hope you got it. If you have any doubt, ask in comment box. Okay, write down it. I am going to save it for you. Okay. We have discussed about shortest time case and shortest path case. Okay, but now we will take an example where there is no shortest time or shortest path. Okay, so let us take one example. Let there is one boat. Okay, let make it very straight line. Width of river, that is W, and here W is like it is 100 meter. Okay, and boat is starting from this point, and this is the just opposite point, that is point P. Okay,
So that is point P, and the boat is starting in this direction at an angle of 30 degree. Okay, and the velocity of boat is let 5 meter per second, and velocity of river, that is velocity of with respect to the river, actually velocity of boat with respect to the river, that is 5 meter per second, and velocity of river, let it is 3 meter per second. Okay, so these are the data, and now you have to find out drift and time to cross this river. Okay, so let us see. Find drift and time to क्रॉस द रिवर. कितना टाइम लगेगा इस बोट को इस रिवर को क्रॉस करने में, और साथ ही साथ ड्रिफ्ट का वैल्यू भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना. आइए देखते हैं. ओके, सॉल्यूशन. Now, first of all, this is VBR, velocity of boat with respect to the river. Now we will take component, that is VBR sin 30 degree. Okay, okay, let it be. And this component is VBR cos 30 degree. Okay, and as we have seen that time was W upon VBR cos theta. W is 100 meter, and here VBR is 5, velocity of boat with respect to the river, cos theta value is 30 degree, so we will write here 30 degree. Okay, so 100 upon 5 cos 30 degree, that is root 3 by 2. So here it will come root 3 by 2. Okay, when we will cut here, it will be 20, so it will be 40 upon root 3 second. This is the time taken by the boat to cross the river. Simple है. VBR value is 5 cos 30 degree, cos 30 degree value is root 3 by 2. So when we will solve it, we will get our answer, that will be 40 upon root 3 second. Okay, it is easy. Now we are going to find out drift. Okay, so first of all write it. I am going to save it for you. If you have any doubt, ask in comment box. Okay, you can ask any doubt. Okay, so now it is the time 40 upon root 3. Now we can use the time for drift also. So drift is VBR sin theta minus VR into T. So VBR is 5 here, that is VBR. Sin angle is 30 degree. Velocity of river, that is 3. Okay, and here T time was 40 upon root 3. Okay, we have solved it. That time was 40 upon root 3. Okay. So now when we will solve it, it will be 5 sin 30, that is 1 by 2 minus 3 40 upon root 3. So here it will be 2.5, it is 3, it is 40 upon root 3. So it will be minus 0.5 actually, 40 upon root 3. So when we will multiply this, 0.0 cancel out, 4 to the 20. So it will be minus 20 upon root 3. Minus 20 upon root 3. Minus, in this direction we took positive. So this will be negative direction. So here we can say that this boat will cross this point P and it will come let here. Okay. So this is the drift here, and that is 20 upon root 3 meter. 20 upon root 3 meter. Okay, minus plus, I hope you got it, because it's in this direction we took positive velocity, that's why it is positive.
direction. So definitely this will be negative direction. So drift is minus 20 upon root 3. It means that distance will be 20 upon root 3 meter. Got it? Okay. In this case we are saying that theta is not 0 degree. In this case we are saying that boat is not reaching at point P. It means it is not shortest time case, and second, it is not shortest path case, because boat is not reaching at point P. It is reaching slightly away from point P. Okay. So this is the general case which is not shortest time, which is not shortest path case. Okay. I hope you got it. Write down it. If you have any doubt, ask in comment box. Okay. So okay. Got it? Okay. Now, let us see. If velocity of river is more than velocity of boat with respect to the river, अगर रिवर का फ्लो का वेलोसिटी बोट के रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो क्या कभी शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस पॉसिबल हो सकता है? आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं. ओके. सो this is VBR, this component was VBR, and this is theta here. Okay, so it will be sine component, and this will be VBR cos theta, and width is this one. Okay, now now here, as we know that drift, that was VBR sin theta minus velocity of river into time. This was the formula of drift. We have seen it. Okay. Now for shortest path, shortest path के लिए drift का value कितना होना चाहिए? 0, so that the boat can reach at this point. Because drift will be 0, it means the boat will finally reach at point P only. Point P पर ही वो boat पहुंच जाएगी. Point P से न तो आगे जा रही है, न पीछे जा रही है. तो अगर ड्रिफ्ट का वैल्यू 0 है, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ केस. शॉर्टेस्ट पाथ केस. ओके. सो फॉर शॉर्टेस्ट पाथ केस, drift should be 0. So if drift will be 0, it means this part will be 0. So this t will come down and it will become 0. So from here we can say, when we will put d is equal to 0 here, then we will get VBR sin theta minus VR 0 upon t. So it will be 0 only. Okay, because time will not be 0 because boat is moving actually. So and time cannot be 0, as we know that, because time is always passing, it doesn't stop. So now when we will solve it, VR will come in this side, so it will be VBR sin theta, it will be VR. So sin theta will be VR upon VBR. Okay. So I hope you got it. We have reached at sin theta is equal to VR upon VBR. This is the condition. This is the condition for which it will be shortest path case. Okay. Because using that condition we have reached till here. Okay. अब देखिए, we know that maximum value of sin theta, that can be only 1. Maximum value sin theta का कितना हो सकता है? 1. Okay. So definitely here we can say that VR
can be less than or equal to VBR. Okay. VR can be less than or equal to VBR, because when VR will be equal to VBR, so it will be cancelled out, sin theta is equal to 1. That is possible. When VR will be less than VBR, okay, when VR will be less than VBR, then also we can say that sin theta will be equal to less than 1. That is also possible. But if VR is greater than VBR, if VR is greater than VBR, if we will put VR is greater than VBR, then this value will be greater than 1. This value will be greater than 1. And we know that sin theta cannot be greater than 1. It means for that situation, it means when velocity of river is greater than, velocity of boat with respect to the river. In this situation, this will not be true, and if this will not be true, definitely all these conditions will not be true. It means in that case it cannot be shortest path case. Okay, तो shortest path होने के लिए वेलोसिटी ऑफ रिवर को वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू द रिवर से या तो कम होना चाहिए या बराबर तक भी चल जाएगा. ठीक है, हालांकि उसके लिए भी हमें इस इनिशियल एंगल को एडजस्ट करना पड़ता है, इस थीटा को एडजस्ट करना पड़ता है. ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ VBR से ज़्यादा है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन VBR, इफ VR इज ग्रेटर देन VBR, देन इस एंगल को चाहे आप कितना भी चेंज कर दीजिए, इस एंगल को चाहे आप कितना भी चेंज कर दीजिए 0 से लेकर 90 तक के बीच, यू विल नॉट बी एबल टू गेट शॉर्टेस्ट पाथ केस. उस सिचुएशन में ये बोट कभी भी सामने वाले पॉइंट पर नहीं पहुंचेगी, बल्कि इसको क्रॉस कर जाएगी एक्चुअली, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर बहुत ज़्यादा है, VBR एक्चुअली ज़्यादा है VBR से. फ्रॉम दिस वी कैन से दिस विल नॉट बी पॉसिबल. इट मीन्स all these things will not be possible. It means shortest path case cannot be possible if VR is greater than VBR. Keep remember it. Okay, तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है. फॉर विच सिचुएशन, फॉर विच केस shortest path case is not possible, and 4 options will be there, that VBR equal to VBR, VR is less than VBR, VR is greater than VBR, and none of these. Okay, so you have to remember this, that VR is greater than VBR, then shortest path case is not possible. Clear? Okay, write down it. If any doubt, ask in comment box. Okay. So this was river boat problem. Here we saw time taken by boat to cross the river, drift, shortest time case, shortest path case, general case, and condition of shortest path case, and in which situation shortest path case will not be possible. And we have seen some examples also. Okay, so in this way we have studied about river boat problem. Okay, let us take few more examples, because through examples only we can understand very properly. Okay, so here let's take one example, that is width. Let width of this river is 100 meter, and velocity of boat with respect to the river, that is, let it is 10 meter per second. Okay,
and velocity of river, that is 5 meter per second. Okay, these are the data given. For which angle, for which value of theta, actually what is theta here in this diagram, it is given, it is theta. Okay, this is VBR. Okay, for which value of theta shortest path case is possible. थीटा की किस वैल्यू के लिए शॉर्टेस्ट पाथ केस पॉसिबल हो सकता है? इट मीन्स दैट बोट शुड रीच फाइनली हियर. ओके, सो सिंपल. फाइनली द बोट should reach at here. So when boat will reach at this point, then definitely we can say that drift will be 0. Okay, drift has become 0. So drift will be 0. So as we have seen, VBR sin theta minus VR into T, that was drift. So when we will solve it, VBR sin theta is equal to VR. So sin theta, it will be VR upon VBR. VR, value of VR, that is 5. Value of VBR, that is 10. Okay, so it will be 1 by 2, and we know that when sin theta is 1 by 2, then theta will be 30 degree. Okay, so theta is equal to 30 degree. That is the answer. Got it? Simple, simple, simple. Drift formula you should learn, and concept must be very clear. Okay, okay. So write it. Okay. So this was shortest path case, and let's take one more example of shortest time also. General case we have seen. Okay, general case example also we have seen. Okay. Shortest time. For shortest time, the boat should start in this direction. River is flowing in this direction. So finally the boat will come at this point. Okay. So here now we are saying, let same velocity of boat with respect to river, that is 10 meter per second. Velocity of river, that is 5 meter per second. Okay. Okay. Find drift of boat. It means we are going to find out this distance from point P to the final point of boat. Okay, so find out drift of boat for shortest time case. Okay, शॉर्टेस्ट टाइम केस के लिए हमें ड्रिफ्ट का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है. आइए देखते हैं क्या आएगा. सो एज वी हैव सॉल्व्ड, ड्रिफ्ट वाज VBR sin theta minus VR into T. Okay, so drift will be theta. For shortest time case, theta was 0 degree, that we have already discussed. Okay, so theta is equal to 0 degree. Theta is equal to 0 degree for shortest time case. Okay, so when we will put this theta here, so D VBR, what is VBR here? VBR is 10.
VBR is 10. So it is 10 sine 0 degree minus VR. What is VR? That is 5. T, that was W upon VBR cos theta. That we have seen. Okay. VBR cos theta. VBR cos theta. Let the width is same, that is 100 meter. Okay. So 100 meter. So D will be sine 0 degree, that will be 0. It will be minus 5. W is 100 meter. VBR is 10. VBR is 10. Cos theta was 0 degree, and we know that value of cos 0 degree is 1. So when we will solve it, we will find the drift. 0 cancel out, it will be minus 50 meter. Minus 50 meter. Minus 50 matlab the boat will come in this side. Okay. So this distance D, that will be 50 meter. Okay. So this was shortest time case, and we have seen examples of shortest path case also. Got it? Write down it. Any doubt, ask in comment box. Okay. Okay. So this was river boat problem. Solve more and more examples, more and more questions, and if you have any doubt, ask in comment box. We will try to solve your problems as soon as possible. Okay. प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, याद रखिए. ओके. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट विल मेक यू परफेक्ट. ओके. ओके. So we have seen this. Riverboat problem is over. Now we are going to see projectile motion. Actually, in live class we have discussed about projectile motion. So here we will see only some revision part here. Okay, because in that lecture you can understand that how we can find out time of flight, maximum height, horizontal range, that we have discussed in that lecture. Okay. So here we are going to just revise. Projectile motion. Okay. प्रोजेक्टाइल मोशन का एक लेक्चर लाइव क्लास में हो चुका है. अब हम लोग उसी से थोड़ा सा आगे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले जो हमने उस क्लास में पढ़ा था उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एक्चुअली क्या क्या हुआ था उसमें, डेफिनेशन वगैरह वो सब हमने देख ली थी, कंडीशन क्या थी वो भी हमने देख ली थी कि इनिशियल वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए. इन दैट सिचुएशन इट विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन. और प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने एक एग्जांपल भी वहाँ पर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि कोई बॉल को अगर हम लोग ऑब्लिकली थ्रो करते हैं सो इट विल मूव लाइक दिस. सो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके. इन दैट केस देयर वाज ओनली वन फोर्स, दैट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज कांस्टेंट आल्सो. ओके. सो द बॉल शुड नॉट मूव so high, otherwise force will change, it will not be projectile motion. Okay. So the ball should move near the earth, and for in this way force will be constant. Okay. And the initial angle between initial velocity and the force, that should not be 0 degree or 180 degree. These are the conditions for projectile motion. ये condition थी projectile motion की. Okay. आइए थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको. सो ये हॉरिजॉन्टल हमने एक बॉल को यहाँ पर थ्रो किया, वेलोसिटी दी u, लेट द बॉल विल कम हियर. दिस वाज द रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअली. दिस वाज मैक्सिमम हाइट, एंड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इट विल टेक टाइम t, that is time of flight. So capital T, capital H and capital R formula we have got.
in our previous lecture where we learned about projectile motion. Okay. So time of flight, that was 2u sin theta upon g. This angle was theta actually, horizontal के साथ जो angle था. Formula of h, that was u square sin square theta upon 2g, and formula of range, that was u square sin 2 theta upon g. These were the formulae. We have derived all these formulae. Okay. Time of flight, maximum height, horizontal range. Okay. And in that class we saw some examples also. 3 examples we have discussed. Okay. Now here we will discuss this topic in more depth. Okay. और ज़्यादा डेप्थ में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो इसमें एक्स्ट्रा हम लोग समझ सकते हैं. ओके. तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, देयर विल बी 2 फॉर्म्स एक्चुअली. अब here we are going to see that what will be the path of projectile. प्रोजेक्टाइल का ये जो पाथ है ये कैसा होगा. Will it be parabolic? Will it be hyperbolic? Will it be circular or any other shape? That we are going to find out. Okay. So let us see how we will find out. As we have already know that relation between x and y. What is x and y here? X and y are coordinates. Okay. This path is in a plane. So actually projectile motion is an example of 2-dimensional motion. So here we are taking x axis and y axis. X axis और y axis में ये motion हो रहा है. That it is y axis and it is x axis. So in this plane we can adjust the path. So it is an example of 2-dimensional motion. So x और y के बीच अगर हमें रिलेशन मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि इसका पाथ कैसा होगा. क्या ये पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, सर्कुलर होगा या कोई और शेप होगी. ओके. कैसे देखते हैं एक बार फिर से. y is equal to mx plus c. We have seen that this is the equation of straight line. This is the equation of straight line. Okay. X square plus y square is equal to r square. This is the equation of circle. This is the equation of circle. पैराबोला के लिए याद रखिए there is condition, that is y square is equal to kx और x square is equal to ky और y square is equal to minus kx और x square is equal to minus ky. These are the equations of parabola. अगर x और y में से किसी एक की मैक्सिमम पावर 2 हो और दूसरे की मैक्सिमम पावर 1 हो तो उस रिलेशन से जो पाथ बनता है, जो शेप बनती है वो पैराबोलिक होती है. इट मीन्स दीज आर द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला. दीज आर द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला. याद रखिएगा इन चारों इक्वेशंस को. ओके. अब देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इट. सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए ताकि हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस कर पाएँ. पैराबोला के बारे में मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ. ओके. पैराबोलिक पाथ की जो शेप होती है वो कैसी होती है और कौन सा इक्वेशन कहाँ अप्लाई होता है. ओके. आइए देखते हैं. पैराबोला. y स्क्वायर इज इक्वल टू kx. इसका जो पाथ आएगा, अच्छा इसका
इसका जो पाथ आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, दैट विल बी लाइक दिस एक्चुअली, ओके, समथिंग लाइक दिस. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. देखिए इसके पाथ को याद रखने के लिए आप लोग एक ट्रिक याद रख सकते हैं. सिंगल पावर के दोनों ओर, या हम कहें कि कम पावर के दोनों ओर. कम पावर किसकी है? एक्स की. एक्स की पावर 1, वाई की पावर 2. तो सिंगल पावर के दोनों ओर, तो सिंगल पावर किसकी है? एक्स की. तो सिंगल पावर के दोनों ओर ये शेप सिमेट्रिकली आएगी, ऊपर भी आएगी और वैसे ही शेप नीचे भी आएगी, ठीक है ना. लेकिन अगर इफ दिस इक्वेशन is in this form, x square is equal to ky, so here we can see that single power is of y, single power is of y. So here both sides of y axis, it means the shape will be like this, okay, little bit like this. Here, then here, this will be the shape for this equation. This is parabola, this is parabola, okay. So write down these two. Now we are taking two more diagrams, okay. आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा. Now I am going to take two more diagrams. अगर यहाँ पर माइनस होता ठीक है, तो क्या होता? ये डायग्राम जस्ट इस डायरेक्शन में आ जाता. It means this diagram will be like this and this part will be removed, okay. It was like this actually, okay. So this will be the path of this equation. सिंगल पावर के दोनों ओर, सिंगल पावर किसकी है? एक्स की, लेकिन माइनस में. सो माइनस एक्स इसके दोनों ओर सिमेट्रिकली, ओके. सिमिलरली अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये डायग्राम ऐसे नहीं आता बल्कि नीचे की ओर आता, ओके. कैसे आता? आइए, it will be like this. So this is the diagram for this equation, it is parabolic, and this is the diagram for this equation, this is also parabola, okay. So keep remember these four equations and the corresponding diagrams, okay. Write down it. Any doubt, ask in comment box. Okay, actually these are the very simple equations of parabola, but in coordinate mathematics this topic is in very much depth, okay. But here if you are a student of NEET, then you require these four equations and few more equations which will be sufficient for NEET examination. But if you are from mathematics, then definitely you will study this topic in mathematics in very much depth, okay. So you need not to worry about anything. Whatever is required I am telling here, each and every point I am discussing here, okay. So these were the four shapes and four equations of parabola. Now it can be like this also. If y is equal to ax minus bx square, if this comes, okay, y is equal to ax minus bx square, if this is the equation, this is also the equation of parabola, because here we are seeing that maximum power of x is 2 and maximum power of y is 1. So this is the equation of parabola. Simply just learn, अगर y और x में किसी एक की पावर 2 हो, दूसरे की पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन होगी. तो आइए इसको भी देख लेते हैं. It is x, it is y. First of all, we are seeing that if we put x is equal to 0, then y will be 0.
अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखूँ तो क्या y का वैल्यू 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है. ओके, इट मीन्स दिस पैराबोला विल पास फ्रॉम origin. ओके, इट विल पास फ्रॉम origin. तो यहाँ से ये पास होगा. ठीक है, अब सिंगल पावर की बात करें तो y आ रहा है, तो y के दोनों ओर इट विल बी लाइक दिस. ओके, इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है. अगर एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ प्लस आता तो ये डायग्राम उल्टा होता, लेकिन माइनस आ रहा है तो ये डायग्राम नीचे की ओर है. ओके, सो दिस विल बी द कर्व ऑफ दिस पैराबोला. कीप रिमेंबर इट. डायरेक्टली नीट वालों को ये याद रखना है, और आईआईटी वाले बच्चों को तो ये टॉपिक मैथमेटिक्स के अंदर और भी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया ही जाएगा, तो उनके लिए तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है. नीट वालों के लिए भी आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, इफ दिस इज द इक्वेशन देन दिस विल बी द पाथ. Okay, and we can find out coordinate of this point also. How? Because at x-axis y will be 0. If we put y 0 here, then it will be 0. X will come common. Okay, so a minus bx. So from here value of x will be 0 from here, and a minus bx is equal to 0. So x will be a upon b. Okay, so x 0 that came here, this point, and x is a upon b, that will be here, a upon b comma 0, and this will be 0 comma 0, because at x axis y coordinate will be 0. So it is 0 here and this also 0 here. Okay, so this will be a upon b comma 0, and this will be 0 comma 0. So this will be the shape of this equation. Okay, keep remember it directly. आपको ये डायरेक्टली याद रखना है. अगर यहाँ पर प्लस होता, ओके, राइट डाउन इट, अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो उस केस में शेप किधर होती और कैसी होती, आइए देख लेते हैं. अगर यहाँ पर प्लस होता, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर. ओके, so here we are seeing that first of all x axis y axis, if we put 0 0 then both side will be 0. It means this equation can be satisfied from origin, or we can say from the coordinates of origin, that is 0 0. So definitely this parabola will pass from this point, no doubt. Okay, now plus and plus sign here. So this curve will be like this. How I draw it? Here we can see. अच्छा, एक बात और, ये पाथ जो है वो यहाँ से भी तो पास हो सकता था, लेकिन मैंने इसको यहीं से पास करवाया है. क्यों? वजह क्या है? अगर मैं देखूं तो y का वैल्यू 0 होने पर, इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0, ओके, देन आई विल सी दैट इट विल बी x कॉमन a प्लस बी एक्स. सो x विल बी 0 फ्रॉम हियर, एंड a plus bx is equal to 0. So x will be minus a upon b. X will be minus a upon b, and x will be minus a upon b. That will not come in this side. That point will not come in this side. That point can come only in this side. So here x 0, y 0, and here y 0 and x is minus a upon b. So this point and this point, at these 2 points this curve will cut x axis. Okay, so this is how we can find out these coordinates. Okay, so directly you have to learn that if here is plus sign, then this curve will be like this, and if here is minus sign, then this curve will be like this. Okay, okay.
अगर हम लोग इसको उल्टा करके इधर ले आए, अगर इस कर्व को उल्टा करके पलट दें तो ये डायग्राम बन जाएगा। ओके, ऐसे भी आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन इट okay directly. So we have seen 6 equations and 6 diagrams of those equations, okay, 4 simple equations and 2 little bit complicated equation, which are this one and this one. Okay, write down it, because all these things will be used in projectile motion. Okay, write down it. If any doubt, ask in comment. Okay, so I hope you got it. Any doubt, then ask in comment box. Okay, so now we will see in next class that how we can find out equation of projectile motion. It means we will see that what will be the path of projectile, and there we will see some more questions, examples and a lot of information about projectile motion. Okay, so for this class, that's it. We will meet in next class. Till then, bye bye.